Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to a brand new stream of ZBit where we talk everything that's related to cryptocurrency, financial markets, and financial products. I hope you guys are doing well, and yet we are here for another stream. So, to the people who do not know, my name is Nida Afreen, and I am basically a live stream host for ZBit platform. So, welcome all you people. Just a sec. So let's begin the day. As we all know, we are heading towards a new day, and while the other people are joining for the stream, I hope I know the markets flushed out everything yesterday, and yesterday was such a bad day, honestly speaking. When I was like almost sleeping, and then suddenly I just happened to open the the application, and I was just checking what is happening there, and I was totally shocked looking at the numbers there. So it definitely came as like a shock for me when market actually crashed like crazy, especially when it came to Sui as well as for Ethereum or anyone for that matter. You can see how the liquidations have happened. Like it went till 3,444 yesterday. Like uh, it's definitely something very unexpected. In fact, Bitcoin also saw some crazy positions over there. Bitcoin also saw some crazy, movements actually, not position. Sorry, that's the wrong word that I'm using. So that has definitely impacted the overall markets. So you can see yourself on the charts how it is performing and things like that. So let's move on and let's start our day for today. Okay. Let's have a look at the markets first. So the crypto and traditional financial markets, basically they are like around 660 S&P 500, and Bitcoin has reached like 112, and S&P 500 is down by 2.7% recently, reflecting broad weakness in US equities, and Bitcoin is down by 7.6% in the current session. So it's showing sharp volatility there. So major catalyst, major problem, what actually drove the markets last night was the, President Trump announcing a potential 100% tariff on Chinese imports in between Beijing's new export restrictions on key minerals. So markets interpreted this as a reversion to aggressive trade stances, triggering risk of behavior. So in the stock market, technology and semiconductor stocks are bearing the brunt, and like Nvidia, AMD, and other growth tech plays are all under pressure right now. So you can see that markets are basically behaving crazy at the moment uh, after this news that has completely impacted the overall look of it. Now, crypto markets in free fall and liquidations. 19 billion was reportedly wiped out from crypto markets in one day due to panic selling that took place yesterday. Long positions were heavily liquidated, and especially Bitcoin. You can see, like I think it was. We'll also open Bitcoin on the other chart here to see how Bitcoin has performed yesterday. User 972632. Welcome to the stream, my dear. Do you want to tell me your name and something about yourself so that we can connect? Guys, I want you guys to tell me your name and whatever you want to talk to me. Please feel free to talk. Ask me any questions you want to ask. Like, you have any questions, everything which you want to do, you can do it. But before that, if you tell me your name, it will be easier for me to refer to you guys with names and everything, okay? So, as we all know, the long positions they've been liquidated yesterday, and there is a macro whiplash, short-term overreaction to the policy shock. Big banks are exploring the issuance of stable coins tied to major fiat currencies. So
On the broader markets and the macro risk side, the IMF and Bank of England has recently warned about the risk of an abrupt correction, so driven by inflated valuations, especially in the AI and tech sector. So JP Morgan's Jamie Dimon basically has expressed concerns that the odds of a meaningful stock market correction are higher than many believe at the current front. So yes, yesterday, like basically whatever the announcement was done has definitely brought about a very negative impact on the overall prices of markets. Like you can see, it was trading around 126 or it was trading around 122 or something like, and then you can see with the like flash with the whip or with the flash that it kind of went till 107 is what I can see here currently. And then it moved past that those numbers and is like now now trading at 112. So overall, all the cryptocurrency, like let me open this one. So overall, all the coins were affected. Bitcoin is like down by 7.8%. Ethereum is down by 11.91. So these are some very, very unrealistic numbers, honestly speaking, if I can say, like if I'm looking at it. And BNB at 1129, like it's down by 11.2%. Solana at 183.60, it's down by 17.14 or 15%. My God, Solana is seeing such a great jump. Even XRP, for that matter, is looking like seeing that kind of jump. I really, honestly speaking, never imagined that the negativity could be like in the two-digit forms and all of that. So at current present scenario, market is in the fear context. The market capitalization is standing at 3.76 trillion US dollars. Volume is at 523.06 billion US dollars. So market capitalization also seems to have come down. So that is what is being seen here. Okay. Now, what else? What else? Yes, Bitcoin dominance standing at 59.6%, Ethereum at 12.3%, others are standing at 28.0%. So all of them basically are seeing some kind of, I think these numbers don't seem to like move that much, but yes, fear and greed index looks like everybody's panicking at the moment. Nobody is sure of what is lying ahead. So this was an inevitable move. I had this feeling all this while, and I was telling you guys yesterday also in the stream that most probably the market is going to get into consolidation or pullback phase where it is going to correct for itself. Now, how much move was possible was something which was not so sure, because the whale movement, especially the big liquidations that keep happening, or whether it's future or options trading or derivatives that gets liquidated or something, those expirations, obviously we will have to keep a tab on it. Those if they are coming near, then they are definitely going to be a very prime catalyst when the markets will be moving in negative direction. So that is something obviously we all should be aware of. And yesterday, yes, everything came as a shock, but what is lying ahead in the month of October, honestly speaking, to this date and to this time right now where we are, it's really uncertain. And I don't see like at the current situation like anything positive on that front. But even though markets are negative at this current stage, we will have some good opportunities and we will continue to have some successful trades. Let's see now. Like let's analyze it on the 4 hours chart, Ethereum, and see if it has any, if it is having any kind of momentum building up, and we'll try to take some trades into it. So on the 4-hour chart, Ethereum seems to have reached its exhaustion levels. You can see it clearly. So whenever you see that any crypto on this indicator like RSI has reached somewhere below 30, that's where it's likely to like move in the opposite direction after reaching its exhaustion levels.
So let's go back to the 1 hour chart and analyze the same thing. In the 1 hour chart, it seems like it's moved past 30 level after reaching like 13.93 on the charts. All right. So let's move to the 1 minute chart and now continue to see if we have any buying or selling position at the current situation. So markets currently are in the neutral zone. So in present scenario, we do not have any buying or selling position. Let's find any opportunity if we have in SUI or in Doge as well. Let's see if we have something in Doge. I know some of you guys do trade in Doge, so let's see. Doge also saw a remarkable, downfall yesterday, like about it went till 0.0083. So it was trading near almost 0.252. But now it's like fallen down to like yesterday it went till 0.008, which also saw significant decline. So if I try to measure the market from this level to this level, I think it was almost a crash of around 66.45%. So major liquidation that has happened. And on Ethereum's front also, let me have a look on Ethereum. I think Ethereum, let me open my 4 hours chart and see I think Ethereum also saw a very significant decline yesterday. If I measure this from here until this, Ethereum almost saw close to 27 or 28%, close to 27.64%. And SUI on the other side, let's see, SUI, what has it seen? Okay. So we almost saw like 83.75%. Oh my God. That's too much to handle, seriously. So Doge was like around 67% almost approximately. So you like, in fact, like saw more significant movement than Doge. It's like almost like 85% close to. And Ethereum on the other side was like around 27%. So all of them has seen some significant, downfall. So some major liquidations after the news was out. Now is the time we will identify some buying opportunities for us. Okay, let's move to either 15 minutes time frame or on a 5 minute or a 1 minute time frame. So people who do scalping, who likes to take trades within a few minutes to hours, or you want to basically exit the market in next couple of hours, then you must be doing either scalping or you must be doing either swing trading. That's what I believe. So you can choose anything between 1 minute time frame to 10 minutes, 5 minutes or 15 minutes of time frame, whatever is good enough for you, and trade accordingly.
So I am on a 1 minute time frame for sway. Let's also put some indicators there to identify where are we heading and all of that. Okay. So I'm going to remove my RSI based MA, like I don't want moving average here. That's okay. So let's continue. I'll be changing a permutation combination here. Don't worry. Like I'll to assess different things in the market. So also that I'm waiting for the users to join in. If in case anybody joins in, then definitely we will have some chit chat. I think Binance has some issue. Let me put Coinbase here. Some of the charts are having some issue there. Okay. Price trading near the neutral zones is not a good idea to enter into trade. So I don't know. So if the buying is going to basically develop from here, which means buying is going to get stronger from here, we will take a short sell position from here. So to ascertain that, I'm going to change my indicator here. The next move that you see and it reaches the exhaustion levels on the charts, that's when you will be taking a short sell position.
It does have still capacity to go further up. So currently at this level, market is trying to retrace back. So in this scenario, we don't really take any kind of trade here because market is trying to move past the exhaustion, like the exhaustion levels are not reached as yet. So it still does have capacity for further going up. But taking profits is your wish. Like if you want to take any profits from 70 level or you want to take it from in between because you have already taken a position a little while ago, can enter into it, guys. Some traders like to take profits from 70 and above, while others try to exit even with a 1:2, 1:3 ratio. So from these levels, you can always start taking profits, but uh, if you want to position a little more better for yourself, you can do that as well. Let's have a look at Doge, what's happening there. Doge also is in a similar situation. Even Sui is in a similar situation. So let's wait until it further moves up. Somebody who missed out the opportunity here now, once the price reaches 70 and above, can start taking profits when it reaches 70 and above on RSI. But because markets are already negative and also it's not having those great movements currently, take calculative risk before you either take short or long. Like make sure to take calculative risk everywhere. So if anybody would have taken any position previously or are trying to take a position now in short sell,
you can wait for some time, and then after a couple of minutes you can take a trade, because right now I can see that the buying pressure is still high. Buying pressure is basically good. User 375086, welcome to the stream, my dear. Any specific requirements, any questions you guys have, please feel free to ask me. Also, make sure, because I give live trades, like live buy sell signals to you guys, to deposit funds. If in case you don't have funds, on the screen you can see there is a deposit button while I'm live. Use that button to deposit funds, and while I'm live, if I give you a trade for buy or sell, you can implement it if you like and take a trade. Currently, you can see Ethereum is almost reaching the exhaustion levels. So traders, whoever basically wants to take a sell position, can from this level take a short sell position, or if you want to wait for some more time till it reaches exhaustion levels, you can do so. Buying in this particular situation is strong. You can identify that on DMI indicator, that buying is at 31.58. So definitely it is strong. So if you want to wait and take a short sell position, you can do it, or you want to exit, or take a position in this scenario also, you can do it. Market is still going to go up because buying is strong at this current situation. So Doge, on the other hand, basically is sitting near the neutral zone. So I wouldn't say to enter into any trade in this current scenario. For swing, I think because it's near the neutral zones, I still recommend to wait, either for price to completely go below the neutral zone and pull back, or for it to go in upward direction. But looking at the current scenario, current situation, price seems to be going down. I will be adding my DMI indicator here to see whether my buying or selling is becoming strong. In this scenario, my selling is strong and buying is weak. So there is no buy or sell position at the moment for swing. For Doge, also there's no buying or selling position. Coming to Ethereum, Ethereum is also sitting near the neutral zones, but in this scenario right now, buying and selling is almost going in sideways direction, which means they are hand in hand. And
until there is clarity, the market is completely moving down, or is it retracing back? We do not have any buy or sell position in the current scenario. इस जगह से अगर मार्केट आपको ऊपर उठती हुई नजर आएगी तो वहां पे शायद हमें सेलिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर यहाँ से नीचे की तरफ फर्दर मूव होती है और न्यूट्रल जोन्स और आरएसआई पे 30 के बिलो चली जाती है तो आप वहां से अपना बाय पोजीशंस लगा सकते हैं। कभी बाय ना करें क्योंकि प्राइस के नीचे होने के चांसेस बहुत है। यहाँ पर बाइंग अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेलिंग स्ट्रॉन्ग है। बाय नहीं करें यहाँ पर। आरएसआई से मैं अपना मूविंग एवरेज हटा लेती हूँ। सेलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है दिस करेंट स्टेट, सो wait until I let you know to take a buy position.
यहाँ से पोजीशन ली जा सकती है, बट इशू यहाँ पर ये है कि छोटा रिट्रेसमेंट रहेगा और दिस कैन बी अ ट्रैप टू ऑल यू गाइस, जहाँ पे बेसिकली स्मार्ट मनी आपके स्टॉप लॉसेस को हिट करवा देगा। तो जब तक वो एग्जॉशन लेवल्स पे ना पहुंचे, कोशिश करें कि ऐसे वाले ट्रेड्स ना लें, क्योंकि ये ट्रेड्स बेसिकली कभी फेक आउट्स में बदल सकते हैं। अभी आप देख रहे हो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुआ एंड वहां से बेसिकली आपको एक फेक आउट सिग्नल मिला है। सिक्स 36937, वेलकम टू द स्ट्रीम माय डियर। बिटकॉइन का दूसरा एप्लीकेशन फाइनेंस में 7%। क्या मतलब है इसका? मैंने आपकी मतलब मुझे आपकी बात नहीं समझ में आ रही है। क्या 7%? ये देखो फिर गायब। गाइस आप लोग क्वेश्चन करते क्यों, फिर गायब क्यों हो जाते, मुझे नहीं समझ में आता। जब क्वेश्चन किया है तो थोड़ा वेट कर लो ना आप लोग जवाब सुनने के लिए और क्लैरिटी से कुछ बात कर लो। एनीवेज मैं आप लोग को बता रही थी गाइस के जहां से प्राइस कभी आपको नजर आए कि आरएसआई पर एग्जॉस्टेड लेवल्स पे नहीं पहुंचा है और फिर वो बीच से कहीं उठते हुए नजर आए, तो ऐसे ट्रेड्स कोशिश करें कि अवॉइड करें, क्योंकि यूजुअली वो लेवल्स पर आपकी लिक्विडिटी ग्रैब होने की कोशिश होती है, विच मीन्स कि आप लोग देखते हो कि प्राइस अब यहाँ से उठ रहा है और आप सोचते हो चलो ठीक है प्राइस उठ रहा है, मैं यहाँ से बाइंग की पोजीशन ले लेता हूँ या ले लेती हूँ। पर होता ये है कि वहीं से एग्जैक्टली जैसे ही आपने वहां पे अपनी बाई ऑर्डर लगाई, वहां से स्मार्ट मनी वाले आपकी लिक्विडिटी को ग्रैब करते हैं, आपके स्टॉप लॉसेस को हिट करते हैं और प्राइस को फिर फर्दर नीचे लेके जाकर वहां से वो बेसिकली आपको आपके स्टॉप लॉसेस को हिट करवाते हैं, जिससे आपने जो प्राइस पे खरीदा होगा या तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है या दूसरा ये होता है सिनेरियो कि आपका पैसा फंस जाता है या तीसरा बेसिकली आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो प्राइस जब भी आपको आरएसआई पे स्पेशली यहाँ से उठते नजर आए ना, लाइक 30 के बिलो ना पहुंचे और वहां से उठता नजर आए, तो ऐसी वाली सिचुएशंस में अवॉइड करना टू टेक अ ट्रेड। ओके, जब तक ये पूरा नीचे 30 के बिलो ना आ जाए तब तक इंतजार करना टू टेक अ ट्रेड। ओके, 605756, वेलकम टू द स्ट्रीम माय डियर, वेलकम, हाय। ये देखो ये अजीब लोग है यार सच में। आप लोग स्ट्रीमिंग ज्वाइन क्यों करते हो यार, एक एक मिनट के लिए आने के वास्ते, या क्या करते हो? एक्चुअली मुझे बड़ा फनी लग रहा है ये सिचुएशन। एक्चुअली आते क्यों? एक्चुअली फुल इंफॉर्मेशन भी नहीं सुनते हो, पूरा किस्सा कहानी नहीं सुनते हो, कुछ नहीं, गायब हो जाते हो। पूरी इंफॉर्मेशन तो लेकर जाओ, उसके बाद अपना डिसाइड करना है। लाइक एक एक मिनट एक एक सेकंड आते हो गायब हो जाते हो, ये पता नहीं क्या मसला है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। खैर, तो गाइज मैं आप लोग को जैसे बता रही थी कि चार्ट पे एक और एक इंडिकेटर होता है जो कि लीनियर रिग्रेशन चैनल में अक्सर आप लोग देखते होंगे कि मैं यूज करती हूँ। उसमें आपको मैनुअली सपोर्ट रेजिस्टेंस को उतारने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो इंडिकेटर इटसेल्फ इज अ वेरी ब्यूटीफुल इंडिकेटर, जहाँ पे वो अगर लोअर बैंड पे आप देखेंगे कि प्राइस पहुंच रहा है तो आप वहां से अपना ट्रेड ले सकते हैं। उस पर भी मैंने आप लोगों को बताया है प्लॉट करके कि यूजली प्राइस सपोर्ट लेवल की तरफ पहुंच जाए तो कोशिश करना कि सपोर्ट पर ना ले, थोड़ा और उससे नीचे प्राइस को वेट करे नीचे जाने का और तब अपना ट्रेड लें, ताकि आप मतलब ना लिक्विडिटी का
लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैब का ना शिकार ना बने, तो कोशिश करें कि और प्राइस थोड़ा सा चीप हो जाए और वो फर्दर नीचे चले जाए, तब अपनी बाइंग करें, ताकि आपको ठीक ठाक मार्जिन भी मिले और ठीक ठाक आपको मूवमेंट भी देखने को मिले। भी देखो, अगर आप लोगों ने यहाँ से यहाँ का ये मूवमेंट लिया होता, अगर आपने यहाँ पर बाइंग की होती, ट्रस्ट में, खैर अभी प्राइस तो रिट्रेस हो रहा है, अगर बाइंग इस समय पे बिल्डअप हो जाती है तो प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन द अदर साइड ऑफ द स्टोरीज के प्रोबेबिलिटी का खेल है, राइट? ये लाइक एक पॉजिटिव साइड होता है, नेगेटिव। अगर यहाँ से प्राइस बेसिकली ऊपर नहीं निकलेगा, लाइक यहाँ से बाइंग प्रेशर बिल्ड होके ऊपर नहीं निकलेगा ना, तो आपके यहाँ पर जो है ना, ट्रैप होने के चांसेस बहुत बन जाते हैं। क्योंकि आरएसआई पे भी आप देख सकते हो कि ये 30 एंड बिलो रीच नहीं किया, तो अभी इसको स्टिल फर्दर नीचे जाने की कैपेसिटी है। अगर आपने यहाँ पे ऑर्डर लगाया ना, तो बेसिकली आपका, अगर और आपने यहाँ ऑर्डर लगाया और आपने यहाँ स्टॉप लॉस फिट किया फॉर एग्जांपल, अभी देखो स्मार्ट बायर्स यहाँ से बेसिकली सेल करेंगे, ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहा, यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और आपका ऑर्डर लिक्विडेट हो जाएगा। तो जितना एग्जॉस्टिव लेवल से आप अपनी ट्रेड ले सकते हो, कोशिश करना कि उतनी एग्जॉस्टिव लेवल से लेना। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रैप नहीं होना है। हाँ, ऑल्सो एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोग को कहती रहती हूँ कि हम लोग इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम लोग, कि हम विद इन फ्यू मिनट्स टू सम आवर्स हम लोग एक सक्सेसफुल ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने सिर्फ छोटा टाइम फ्रेम नहीं देखना है, आपको ऑल्सो यू हैव टू सी बिगर टाइम फ्रेम्स के उस पर आपकी कॉइन, आपकी क्रिप्टो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, वो भी आपको देखना है। यहाँ देखो, जैसे 1 घंटे के चार्ट में आप देख सकते हो कि इथेरियम अभी बेसिकली 36 पर पहुंच गया है। इसके मुताबिक बेसिकली मेरी सेलिंग हाई है और बाइंग मेरी वीक है। तो बड़े पर्सपेक्टिव पे अभी फिलहाल ये सिचुएशन है। 4 आवर्स के चार्ट पे भी मैं देख सकती हूँ कि एग्जॉशन लेवल्स पे है, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि मेरे छोटे टाइम फ्रेम पर भी वो एग्जॉशन लेवल्स पे है, लेकिन अभी उसके पास स्टिल और नीचे उधर जाने की कैपेसिटी वो बता रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाइंग मेरी वीक है और सेलिंग मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सेलिंग मेरी यहाँ पर जब स्ट्रॉन्ग बता रही इवन ऑन बिगर टाइम फ्रेम, तो प्राइस अभी स्टिल फर्दर नीचे जाएगा। तो जो छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने आपको अभी यहाँ पर स्कैल्पिंग में जो पोजीशन लेने के लिए स्टॉप किया है, वो इसी वजह से स्टॉप किया है, क्योंकि ये छोटा सा रिट्रेसमेंट होगा जिससे प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन ये एक ट्रैप होता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये ट्रैप होता है। यहाँ पर जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स होते हैं, वो यहाँ पर आप अपना ट्रेड यहाँ लगाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपना ट्रेड यहाँ लगाया, वो, और आप अपना स्टॉप लॉस इधर लगाओगे थोड़ा सा नीचे, वो इमीडिएटली ट्रेड में घुसेंगे और यहाँ से कुछ थोड़ी सी सेलिंग करेंगे और यहाँ पे प्राइस फट से और नीचे आएगा, तब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपका ट्रेड लिक्विडेट हो जाएगा। तो ये गलती हमें नहीं करना है, हमें वेट करना है till price starts moving in right direction। एक एटलीस्ट मिनिमम 2 या 3 ग्रीन कैंडल फॉर्म होते हुए आप देखो, एंड ऑन द अदर इंडिकेटर्स ऑल्सो आप कंफर्म करो कि लाइक वहां पर बाइंग स्ट्रॉन्ग हो रही है, सेलिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है। डीएमआई से आप मालूम कर सकते हो, या दूसरा आप ये कर सकते हो कि आप ऑल्सो वॉल्यूम इंडिकेटर से मालूम कर सकते हो कि उस जगह पे बाइंग स्ट्रॉन्ग हो रही है या नहीं हो रही है, तब उसके बेसिस पर अपनी ट्रेड ले सकते हो।
ऐसे सिचुएशन में स्टिल आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ये एक ट्रैप है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि सेलिंग अभी भी स्ट्रॉन्ग है, बाइंग अभी भी वीक है। तो ऐसे में अभी स्टिल ट्रेड लेना यानी बाइंग आपने करना अभी स्टिल आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज प्राइस के थोड़े और एग्जॉस्टिव लेवल्स पे पहुंचने के चांसेस हैं। दो चीजें जो इसको कंफर्म करती है वो ये है कि एक तो आपका सेलिंग प्रेशर बहुत हाई है, डीएमआई से वो मुझे पता चलता है। दूसरा, मुझे आरएसआई पे भी पता चलता है कि अभी उसके अंदर स्टिल कैपेसिटी है नीचे जाने की। तो ये दो चीजों से मुझे पता चलता है, जब तक सेलिंग नीचे नहीं आ जाएगी और बाइंग स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगी तब तक ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि पिछली बार आप देख सकते हो उसका स्विंग लो इधर रहा है। अगर हम ये मान के चले कि ये वापस से उसी लेवल को टच करेगा तो आप अपना टारगेट समवेयर अराउंड, सॉरी मैं इसको क्लोज करती हूँ, आप अपना टारगेट समवेयर अराउंड ये लेवल पे रख सकते हैं कि प्राइस इस लेवल तक वापस से रिट्रेस करेगा। But as you know, there is no hard and fast rule here. ये प्राइस यहाँ पे टच करेगा ही करेगा। There is no hard and fast rule. अगर इस लेवल पे बाइंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ये लेवल से बाइंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो प्राइस ऊपर की तरफ शूट कर जाएगा। तो मान के चलना कि ये स्विंग लो वापस से टच करेगा इज अगेन अ प्रोबेबिलिटी, जहां पे हो सकता है यहाँ तक वो रीच करके फिर बाउंस बैक करे। इन केस के बाइंग इस जगह पे स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, पर बाइंग अगर इस जगह स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जो कि राइट नाउ लुकिंग एट द चार्ट्स फॉर मी इट डजंट सीम लाइक, बट यस इधर मैं एक चीज करूंगी, जो कि मैं अपना आरएसआई फिलहाल रिमूव करके आई विल बी पुटिंग माय मनी प्रोफाइल इंडिकेटर, मनी फ्लो प्रोफाइल वाला मैं इंडिकेटर लगाती हूँ यहाँ पे। और मैं यहाँ देखूंगी कि मेरा हाई सेंटिमेंट जोन कौन सा है। मेरा हाई सेंटिमेंट जोन आप देख सकते हो
ओके, ओह माय गॉड, हाउ डू आई, इसको मैं कैसे बड़ा करूँ यार। आप देख सकते हो कि 3835 के आसपास मेरा हाई सेंटीमेंट जोन है। ये वाला जो एरिया है ना 3835 वाला, ये काफी ट्रेड हो रहा है। और फिलहाल जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं 3820, उधर बहुत सारी, एक मिनट में थोड़ा सा और इसको जूम करती हूँ। यहाँ पर एक सेकेंड, अरे यार इसको हटाऊं कैसे। हाँ, अभी आप देख सकते हो कि जैसे प्राइस राइट नाउ यहाँ पर जिस लेवल पे ये चल रहा है, उधर मुझे फिलहाल कुछ नजर तो फिलहाल नहीं आ रहा है। जो ये येलो में आपको हाईलाइटेड बता रहा है, वो आपको हाई ट्रेडेड नोड्स बता रहा है। और जहां पर आपको ग्रीन और डार्क रेड के जो आपको हाइलाइट्स बता रहा है, वो बुलिश और बेरिश नोड्स बता रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको, एक सेकंड, बस लो ट्रेडेड नोड्स नहीं दिखा रहा है एक्चुअली स्पीकिंग। आई थिंक लो ट्रेडेड नोड्स व्हेन लो ट्रेडेड नोड्स यहाँ बता रहा है, इधर ऑन दिस प्रोफाइल।
यहाँ नहीं बता रहा है। ये आप जब टिक अनटिक करोगे तो ये जो राइट साइड आपको टेबल दिख रहा है जिसमें आपको हाई ट्रेडेड नोट्स येलो में यहाँ हाईलाइट करके बता रहा है, जो कि 3835 वाला जोन है, और जो लो ट्रेडेड है वो इधर बता रहा है, जो कि बहुत मिनिमलिस्टिक आपको वहां पे लाइक प्राइस मूवमेंट्स या वॉल्यूम बाई वगैरह नजर आ रही है। अगर इसको आपको अनटिक करना हो तो आप अनटिक करके यहाँ पे सेंटिमेंट प्रोफाइल ओपन कर सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ग्रीन वाले हैं वो पूरे बुलिश वाले सेंटिमेंट्स, और जो ये लाइट ऑरेंज वाले लाइट है ये बेसिकली बेरिश नोट्स है, यानी लोग किस तरीके से उस प्राइस को रिएक्ट कर रहे हैं। बुलिश एंड बेरिश नोट्स का बस मतलब इतना ही है कि बुलिश मतलब आप मतलब वहां पे बहुत सारी बाइंग हो रही है और उस जोन में लोग बहुत बाइंग करना चाहते हैं, वॉल्यूम उधर बढ़ रही है, और बेरिश में बेसिकली वहां पर वो प्राइस पे बेसिकली लोग बहुत सारा सेल कर रहे हैं। तो वो सेंटिमेंट प्रोफाइल में आपको वो देखने को मिल रहा है। अभी अगर आप नीचे जाएंगे तो हाईएस्ट सेंटिमेंट जोन जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, एक सेकंड में थोड़ा सा, जो हाईएस्ट सेंटिमेंट जोन है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको काफी हेल्प करती है टू बी एबल टू डिसाइड कि आपको किस प्राइस पर एंट्री लेनी चाहिए। अभी देखो यहाँ पर ये बेसिकली आपको एक कंसोलिडेशन फेज बता रहा है, जोन बता रहा है, जहां पर आपने somehow मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन जोन इस जगह पर ये सही इंडिकेशन नहीं देता है करके मुझे ऐसा फीलिंग आती है, बिकॉज आई डोंट नो। अगर इसको हम मतलब एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इसकी सेटिंग्स चेंज करके देखना चाहती हूँ। How does it work? So the normal default setting is like 25, but somehow I think that is too much of information to grab the right kind of information. I don't think कि वो हमको जरूरत है उस चीज की, राइट? What really matters to me here is के highest sentiment zone, ये मेरा highest sentiment zone है, यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हो प्राइस बार बार इस जगह को छू कर वापस जा रहा है, तो ये बहुत ज्यादा, ये एरिया बहुत एक्टिव है ऑन द चार्ट्स। बट इस जगह का significance, does that really matter to me or not? Then answer is yes, क्योंकि
लोग ज्यादा से ज्यादा इस प्राइस पे रिएक्ट कर रहे हैं। तो यानी अगर आपने भी ट्रेड लेना हो, चाहे वो बाई का ट्रेड हो या सेल का ट्रेड हो, इस जोन में आप बेसिकली अपनी ट्रेडिंग मतलब प्लान कर सकते हो। मैं ये नहीं कहती कि आपको इस जोन में बाई करना चाहिए या इस जोन में सेल करना चाहिए, पर क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर काफी मतलब एक्टिविटी हुई है इस रीजन में, तो बेसिकली ये हाईएस्ट सेंटीमेंट जोन है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि वॉल्यूम का जब हम प्रोफाइल लगाते हैं तो इस पर आपको ये वाले जोन में, जो बेसिकली कौन सा वाला जोन है, थोड़ा सा मुझे वो करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा। ये जूम होके क्लियरली आ नहीं रहा एक्चुअली, आई डोंट नो। हालांकि मैं आप लोग को थोड़ा सा एनहांस करके इसको बताना चाहती हूँ। आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी दिस। देखो मैं इसको ना पहले इसको निकाल देती हूँ ताकि ये दिखे सीधे। हाँ अभी ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि ये जो येलो वाला हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पर आराम से लाइक 5.85 मिलियन यूएस डॉलर का यहाँ पर एक्टिविटी हुई है। ऑल्दो इट डजंट से कि ये 5.85 लाइक बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है, वो उसकी क्लैरिटी नहीं है, बट यस बिकॉज ये एक हाई सेंटिमेंट प्रोफाइल है, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि ऑलमोस्ट क्लोज टू 13.12% का एक्टिविटी हुई है उस रीजन में। बाकी के आप देख सकते हो कि यहाँ पर उतना ज्यादा आपको लेकिन एक्टिविटी नहीं नजर आ रही है। Like others are also good significant, but this is the highest. Abhi if I remove this particular thing from the chart and I try to just locate high sentiment zone, जो कि मेरे लिए important है, यहाँ पे on this left hand side you can see clearly जो green वाले सारे चीजें हैं वो basically bullish nodes हैं, और जो red वाले हैं वो पूरे bearish nodes हैं। तो ये जो हमने यहाँ पर सेंटिमेंट प्रोफाइल एक एनेबल किया है, उससे ये हमको क्लैरिटी मिल रही है कि यहाँ पर किस किस्म की एक्टिविटी हुई है। यानी 3857 पे यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लोज टू 107 इथेरियम बाय किए गए हैं। ये बेसिकली दिस इज व्हाट इट इज रिफ्लेक्टिंग। सो दिस मनी फ्लो प्रोफाइल will give you a clarity that how much is being bought at this stage and how much are these like getting discarded. So whatever you see in minus and in red zones are all bearish, and like you can see at 3849 price level, around 171 Ethereum got sold, which was almost close to 40.85% of the trade volume that it has traded. So 171 Ethereum got liquidated, means see at this price level, it's showing you all that. So this on this side, what you see, that is the green side is telling you the bullish notes, the orange ones are telling you the bearish notes. So that is telling you what is the activity that is being seen. So green ones all positive buy, and here are all negatives. Whereas what you see in the yellow is the most traded zone. High sentiment profile means most traded zone that we are talking about, where we have a lot of activity in that zone. And I'm not saying that activity is buying activity or selling activity, it's just saying it's an activity which is happening in that zone. Okay, this is about this particular thing that we are seeing, the money profile. Now let's move to this zone and see it on our charts. Okay, so you can see clearly all the red ones basically are rejected zones. This blue ones are all your average zones, and the yellow ones are the high sentiment profile. This one you can see. तो जहां जहां अगर आपको रेड वाला जोन दिखता है, जैसे रेड जोन आपको यहाँ से नजर आ रहा है, तो दिस इज ऑल लाइक प्राइस गेटिंग रिजेक्टेड, price going down or negative or things like that.
and these blue ones are all like average price where it was trading. And even देखो यहाँ पर भी red, not necessary that red will only be in this zone, red can even be in this zone, because price even got rejected at this stage also, right? Like it got rejected and it came down. Then here also it got rejected and then it basically is moving up. So it can be both the ways. It's not like it is going to be just in the bearish node, or it is going to be just in the, when it is like price is high or something. So that is what it is telling you. Now we are clear on what we had to see here. Now we're going to again move back to our indicators. This I was just showing you guys because at times when you're like quite stuck up where you don't know if at this current stage should I take a trade, should I not take a trade. So like you want to confirm with other 2 to 3 indicators, that's when you use this, things, volume profiles or money profiles. Why you use it is because you want to know that whether in this present scenario is volume in those areas increasing or not. If it is increasing, then you know that yes, the price is likely to go up. So then you can also safely buy with the whales over there. But when there is no volume, when there is bearish nodes that are being seen, that there is liquidations that are happening or things like that in that particular area, so you might change your opinion of not buying it in that zone, and you can still wait for right kind of position to arrive. They say like right now you can see here, like we are in the 1 minute time frame, and I was telling you that price has the capacity to test this zone, and it can further go down, but it can also basically rally up depending on if the buying pressure is building up at that level. So you can see here clearly in the DMI, the buying pressure is not building up. Selling is still basically, getting strong here. It is superseding, it is overpowering the buying pressure here. So in that scenario, the chances of it to further come down are more. Like it might hit the, previous swing low that it has created. So whatever you see currently is all into consolidation phase where price is trying to gain some momentum here. It is trying to accumulate some orders in this zone. Like the price either has to always move in upward direction in this scenario, or either it has to move in the downward scenario like this. But what you see currently is it is going in sideways direction. So it means that it is not able to decide seriously like where it has to move. Now, if it has to move, it has to completely either start coming down, which is a thing, like it has to come down, and definitely it doesn't come in straight direction, but it comes in that direction only. So that is what it is supposed to do, or it has to completely climb up. Okay. Now, one more thing which I will do in this particular scenario is, okay, I can see that my buying is trying to become strong, my selling is becoming weak here. In fact, on the RSI also, I can see that it's moved past the neutral zones. So now looks like my buying pressure is building up. So if I want to take a trade here, I can do so. See, you can take a trade here. You can enter into this candle, but you have to be very careful because the smart money movers or the big traders usually who have like large volumes, they capture such small movements and take their trades and exit the market immediately. You see, I was telling you guys that take a trade, immediately the price got rejected, because what people do is like they have like big amounts, 20,000, 30,000, 50,000, whatever. They put the money, or even in millions, the moment like the trade executes, market moves like a little far off, like maybe 0.5 7%, something like that. Immediately they exit the market, thereby they put you as a retail trader into a loss, or in a stop loss, or in a trap. So you see it was just 0.48%, but for you as a retail trader, you might be thinking 0.48% might not give you that kind of great profits, but uh, but for the big traders, this was a successful trade for them. You looking at a big candle there, like strong candle, oh, the price is becoming strong, you also follow their
footstep and try to enter into the trade, immediately they basically try to trap you into it, and they try to make you hit your stop loss. So any which way, all you need to do is like you have to be careful if you're trading in your any strong cryptocurrency, which like yesterday again, that was a one of a case where we saw that the market crashed crazily because the tariffs were imposed and things like that. But normally it doesn't happen like that. So in normal days, set aside yesterday's thing, like you can always take a trade, you can wait, there will be retracement, and then you have to exit. If anybody entered the trade in any of these candles is okay, because price can retrace and then it can shoot up. You can see the W pattern got created, so most likely price will continue to shoot up a little and then it will try to take a turn. So at current level it is at 56. Some liquidations looks like are happening, but both buying and selling us just sitting at like side, they're standing hand, like together, like they are what, how do I say, they're like uh, they're just fighting that war right now. So in this scenario, yes, if again the buying pressure in this level builds up, then the price will further go up and then it will come down. So the W pattern that has been created looks like price can go up, but on DMI I'm not too sure because my buying is still not becoming strong here. So I still have a slight little doubt here until the scenario completely changes, because there's an indecision candle that's getting built, like there's an indecision candle that's forming there. So yes, the next 1 minute will be a game changer for all of us. Yeah, in this scenario, the selling pressure is building up. So if you want to capture smallest and minute of the moments, you can always do. All you can do is it, like entering into the trade. Like for example, I'm not saying you cannot enter trade into this zone. You can always enter. But if you have a strategy of trying to exit the market within few minutes, that is not possible for you as a retail trader until your amount or your position is like too big. It's not possible to capture this moment. While you can see like I'll change the time frame, you can see this yourself. Like this could be a very different scenario on a 15 minutes time frame. So you need to decide it on your own self. See, on a 15 minutes time frame, now you can see the scenario is completely changing. If you would have entered trade in this particular zone, I think I need to first like maybe first capture that movement. So my movement was at 3815. Okay, 3815. So on a 15 minutes time frame, I'll come back here. I'll try to enhance this little bit because I want to capture the 3815 movement here. So 3815 is here. Okay, 3815. So if I would have entered into the trade here, like I'm trying to basically plot this on my chart, 3815. So this movement is almost like 0.45% only. So on a 15 minutes time frame, you can see it's standing above the neutral zone, which means it's in the bullish zone still. So yes, it kind of is still indicating that the price has the capacity to go further up. But because neutral zones are like mostly where the price is consolidating, or it's a small pullback where it is deciding it has to go up or it has to go down. So then in that scenario, like you can see, if you were to put if you were to put a position here and your position is not too big, uh, then you will not be making any profits for sure. Like I'll take a long position here. Let me see how much would that be in terms of my risk to reward ratio that I want to. Will that be a good?
I need to adjust this. Okay, I'm trying to capture the move. So the move was still here. Okay. So you see, it was not even, the move was not even, and I tried to take the trade more down. You see, it's not even one, it's 0.18%. So that is why I was telling you, don't take, because you see, you can't capture that particular moment over there in scalping. Yes, probably for long, big traders could have been a good opportunity, but for you as a retail trader, this particular moment has not given you any kind of profits. In fact, you can't even reach the target in this zone. So better to avoid such kind of areas, and I don't recommend you guys to capture those kind of areas for your trades. Or the only thing that can happen is you take a trade in this candle, but then you have to wait for a couple of minutes. You need to, you can't scalp here for sure, but you can do a swing trading, which means as a swing trader, if you have taken a position here, like if you are taking a position here, for example, let me again plot it. You need to put a, like you want to put a 1:2, 1:2, this is 1:1 ratio. So your target should be in 3937. If in case you want to enhance your position more and put it like 1:2 or something, then go for where is it, 1:2. But the problem here is you have to wait a little for it, because in scalping for sure you're not going to capture this movement. Okay, two is here. 1:2, yeah, 1:2 is here, somewhere here, which is 4061 or something. And and stop losses, I need to just check where can I put my stop loss. Yeah, stop loss can be below this. I don't know if on this chart I captured it properly or not. Yeah, I think I tried to capture it accurately, but you can also adjust. See, this is how your setup should look like. But coming to this, like you want to set up a target which is to the new, like the previous high that is there. Now let's come to this side. You want to take a position there, you can, but you need to wait horizontal line. The next, the previous swing high was at this level. So, but if I try to set that up as my target, it's going to be too much. But wait, what is it? It's 11%, 1:11. But do I want to do 1:11 in this present scenario, because markets are already down? It's not practically possible. Reason being, because markets are already down and the sentiments are all negative. Everybody's fearing. Most of them are liquidating their positions. So markets are moving in the downward direction. At this present stage, to be able to take that kind of what do you call, very ambitious target, it's not practically possible. So maybe you can keep a position of 1:1, 1:2, 1:3 max. 1:3 also for me somehow looks very difficult in this current scenario, because market yesterday like crashed around, for Ethereum at least it crashed around 27 to 28%. Doge was almost like 65%, and Sui was almost like 85%. So can you imagine, like, it is one of a case where market has crashed like crazy, but normally in normal days this target was like an achievable thing. It was not something like not achievable or something. Even when you're swing trading, you're like trying to take a long position for like a couple of hours, it was possible. But now current situation, because markets are already down, and how this
I know that yesterday the impact was negative, but will that negativity continue here and the liquidations will continue to happen, or people will start becoming neutral in this zone, or people will start behaving neutral from now onwards? We can't say. So हो सकता है कि the sentiment might change. I know on the fear and greed index also we saw it is in the fear zone, and everybody is fearing that the markets like obviously there has been so many liquidations that has happened recently, so people might be fearing that, but इट्स वेरी मच पॉसिबल। ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैंने स्विंग हाई के बेसिस पे लंबा सा ऑर्डर प्लेस कर दिया है, बट नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू डू दिस ऑन द इन द करंट सिनेरियो। ऑल्सो एक मिनट, मैं इसको अगर 1 आवर या 4 आवर के चार्ट पे इसको थोड़ा सा एनालाइज करूं, तो आप देख सकते हो ये जो मैंने स्विंग हाई जो लिया है ना, ये बेसिकली 1 आवर के चार्ट पे भी प्रीवियस स्विंग हाई 1 घंटा पहले का टारगेट लिया है मैंने, मतलब 1 घंटा नहीं, सॉरी, व्हाट आई एम टेलिंग यू, ये बेसिकली 1 घंटे के चार्ट पे ये देखो 10 अक्टूबर को यहाँ पे इसने सबसे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ बनाया था। तो ये आराम से आप सोचो कि ये आराम से अगर इस वाली जोन में आपको पहुंचना है तो मिनिमम आपको 24 आवर्स का टाइम तो यहाँ पे लग ही जाएगा। अगर ये हम मान के चलते हैं कि मार्केट ने इस लेवल से इस लेवल की छलांग लगाई 24 घंटे के अंदर अंदर, तो फिर इस लेवल से इसको इस लेवल पे उठने के लिए फिर से लाइक मिनिमम एटलीस्ट यहाँ से यहाँ उठने के लिए उसको मिनिमम लाइक 12 से 24 घंटे तो लग जाएंगे। आई नो कि ये लिक्विडेशन जो इतनी फटाक से जो हुए हैं, ये बहुत काफी इमीडिएट रिस्पॉन्सेज रहे हैं। तो उसी तरीके से जैसे अगर कुछ पॉजिटिव होते हुए नजर आए या फिर वेल एंट्री या कोई ऑर्डर ब्लॉक्स फॉर्म होते हैं इन एरियाज में, तो हो सकता है कि अगले 24 घंटे में यहाँ वाला जो ये टारगेट है वो रीच हो जाएगा। हाँ, ये जो हमने टारगेट सेट किया है ये बेसिकली स्कैल्पिंग वाली स्ट्रेटेजी तो पक्का नहीं है, ये बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग में आप बोल सकते हो। मैं तो खैर इसको इंट्राडे ट्रेडिंग भी नहीं बोलूंगी क्योंकि ये 24 घंटे से ज्यादा टाइम ले लेगा पक्का। ये इतनी जल्दी तो ऐसा इतना बड़ा टारगेट अचीव होना मुमकिन नहीं है, स्पेशली गिवन दैट अभी उसने करेक्शंस किए हैं। अंटिल अनलेस के कोई बड़ा सा मछली बड़ी सी वेल अंदर घुस जाती है, कोई बड़ा सा ऑर्डर आ जाता है तो उधर तक पहुंच जाए तो वो पॉसिबिलिटी है, बट अदरवाइज जिस तरीके से राइट नाउ जिस तरीके की सेंटिमेंट्स बिल्ट है मार्केट में, उससे तो मुझे 24 आवर्स में भी ये वाला टारगेट अचीव होना थोड़ा सा मुश्किल ही लगता है। तो देखते हैं हाउ विल इट बी। टारगेट तो हमने ये लाइक स्विंग ट्रेडिंग के लिए सेट किया है। अभी अगर आपको क्या कहते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक लेट मी आल्सो पुट दिस इन 4 आवर्स चार्ट एंड सी। 4 आवर्स चार्ट में भी मैंने एक्चुअली स्पीकिंग देखो आपने 4 आवर्स चार्ट में भी मैंने काफी बड़ा टारगेट लिया है इसको यहाँ रीच करने के लिए। अगर ये वाला जोन वापस से रीटेस्ट होगा, ये स्विंग वाला, तो यहाँ पर आपने ये ले रखा है, बट ये आपकी पॉजिटिव साइड वाली बात हो गई। इसका ऑब्वियसली हमने नेगेटिव एस्पेक्ट तो कंसिडर किया ही नहीं। व्हाट इफ के और फर्दर कुछ ऐसी सडनली कुछ न्यूज आ जाए या कुछ ऐसी चीज हो जाए जिससे मार्केट और शायद हो सकता है कि यहाँ से भी फर्दर नीचे निकल जाए, तो इसीलिए इन दैट सिनेरियो मैंने आपको उतना बड़ा टारगेट ना लेने के लिए रेकमेंड किया है। मैंने बोला है कि आपको यहाँ पर जहाँ पे भी लाइक थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाती है 1:2 1:3 पे आपने एग्जिट मारना है, क्योंकि फिर वहां से फिर वो उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाई, वहां तक वो रिटेस्ट नहीं कर पाई और फर्दर कुछ नेगेटिव आ गया तो वो मार्केट फर्दर नीचे क्रैश करके हो सकता है कि वो नीचे की तरफ भी बढ़ जाए। देखो अभी कल उसने इस जोन तक टेस्ट कर दिया है, ये वाले जोन तक ऑलमोस्ट, जो कि बेसिकली इसने जो अगस्त में इसने लोज बनाए थे उस वाले जोन को इसने टेस्ट कर दिया है।
तो अभी पॉसिबिलिटी है कि वो और फर्दर भी नीचे चले जाए, जो कि ये वाले जोन को आके भी टेस्ट कर दे, तो यू नेवर नो। तो हमें इतना बड़ा एम्बिशियस गोल या टारगेट लेके नहीं चलना चाहिए, जो कि जिससे बेसिकली पैसा बहुत दिन तक बच जाता है। भाई मतलब मैं तो ये नहीं बोलती कि आप लोग को डे ट्रेडर बनना चाहिए, स्कैल्पर बनना चाहिए, या ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज है, जिस लेवल पे आप अपनी ट्रेड्स ले सकते हो, जिस लेवल से आप अपना कर सकते हो, वो मैं आपको सारे के सारे पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ कि चार्ट पे आप क्या कर सकते हो और आप किस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर सकते हो। अगर इस जगह पे भी आपने अपनी लगा ली है पोजीशन बाय के लिए, तो शॉर्ट टर्म में चलो, शॉर्ट टर्म में चल के देखते हैं। लॉन्ग टर्म में तो हमने बात कर ली फ्रॉम पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इट, बट अभी जो है ना, ये हम लोग स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात कर ली। अभी प्रॉब्लम यही होगा कि यहाँ पर आपने अगर ज्वाइन लाइक अगर आपने बाय कर लिया होता, तो स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग में तो मैंने आपको एक उसका आइडिया दे दिया है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। बट अगर इस पोजीशन पे हो सकता है, क्योंकि आप इंसान ही है, हम लोग, गलतियां होती है हमसे। अगर आपने कुछ गलती करी, जैसे फॉर एग्जांपल कल की तारीख में आई एम श्योर अगर किसी भी इंसान ने कोई प्रिडिक्शन लेकर अपनी ट्रेड फिक्स की होगी, क्योंकि ये जो टैरिफ्स वाला जो न्यूज बाहर निकला था, ये बेसिकली अनप्रिडिक्टेबल न्यूज था, ये एक एक्सपेक्टेड न्यूज नहीं था। हालांकि मैं कितने दिन से हर रोज तो मैं जब ये सेशन में आती हूँ तो मैं मोस्टली ना पहले न्यूज से ही शुरुआत करती हूँ, और कहीं पर भी न्यूज में कहीं पे भी चर्चा नहीं था इस बारे में कि कोई टैरिफ के रिलेटेड कुछ न्यूज आने वाली है या समथिंग न्यू इज गोइंग टू कम। हाँ, थोड़ी सी दिल में बातें तो थी, एवरीबडी हैज दिस थिंग इन द माइंड कि हाँ, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में बिटकॉइन कंप्लीटली 125 ऑल टाइम हाई रीच कर गया, ये हो गया, वो हो गया। तो डाउट तो था कि हाँ, करेक्शन तो बनता है, क्योंकि अब हाई पे रीच कर गया, तो अब उन सबको भी तो अपना लिक्विडेट करके मार्केट से एग्जिट लेना है, राइट? तभी तो फिर दूसरे बायर्स घुसेंगे, फिर सब लोग जो जिन्होंने बाय करके उसको ऑलरेडी इतनी ऊंचाई पे पहुंचा दिया है, उनको भी प्रॉफिट लेके अपना निकलना है, और फिर नए वालों को भी तो एंटर करना है। तो वो तो सबको इनएविडेंटली लाइक इनएविटेबली सबको पता था कि करेक्शन तो होगा, लेकिन इस तरीके से ऐसा झटका लगेगा हम सबको कि मतलब इथेरियम 28% गिर जाएगी, बिटकॉइन सुई मतलब ऑलमोस्ट 85% गिर जाएगी, डोज 65% गिर जाएगी। आई थिंक बिटकॉइन को मैंने शायद मेजर नहीं किया। बिटकॉइन का मैंने, एक मिनट, बिटकॉइन को देखते हैं एक बार, बिटकॉइन कितना गिरी थी कल से अब तक। मैंने वो तो थोड़ा सा मेजर ही नहीं किया। स्टार्टिंग ऑफ द सेशन मैंने आप लोग को बोला था हम बिटकॉइन को भी मेजर करते हैं कि कितना कितना गिरी है ना बिटकॉइन। ये देखो बिटकॉइन का भी, ओ माय गॉड, ये सुई आ गया, बिटकॉइन कहाँ से आएगी? मैं भी कैसी हूँ यार, अभी क्या देख रहे हैं। हाँ, ये रहा बिटकॉइन। अभी देखो बिटकॉइन का कितना मूवमेंट रहा है कल से अब तक। बिटकॉइन भी ऑलमोस्ट अगर हम मेजर करें, यहाँ से उसने छलांग मारी तो ये गई और ये आई यहाँ तक। बिटकॉइन ने खैर बेसिकली 12.5% का मूव लिया, इथेरियम ने 28% का मूव दिया, और डोज ने 65 और सुई ने मतलब 85। तो हाईएस्ट बेसिकली सुई ही रही है। तो खैर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसके ये जो जैसे ये बड़ा वाला मूवमेंट हमारे से मिस हो गया है कल रात में, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज नजर आई। तो अगर किसी ने भी आज कल, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छी चल रही थी जिस टाइम पे हम लोग बात कर रहे थे, वी वर ऑल डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग, तो उस वक्त अच्छी चल रही थी। आप लोगों ने अगर पोजीशन लगा भी रखी थी होगी उस वक्त, अज्यूमिंग के मार्केट ऊपर ही जाएगी करके, तो आपको भी तो झटका लगा ही ना। खैर गुड थिंग इज के हम में से किसी ने, मतलब मैंने तो एटलीस्ट ट्रेड नहीं लिया। आई डोंट नो कि आप लोगों ने कोई किसी ने कल पोजीशन ली थी होगी और आपको इतना सीरियस कल के रात से लेके आज तक कुछ झटका लगा होगा या नहीं, शॉक लगा होगा या नहीं, पता नहीं। बट ये चीज डेफिनेटली आप देख सकते हो। अभी
अभी तो खैर वन ऑफ अ केस हो चुका है, लेकिन फिलहाल वी स्टिल हैव दी यू नो अपॉर्चुनिटी टू बाय। जब भी मार्केट डिप होती है, डरने की बात नहीं होती है, ठीक है, लिक्विडेशंस वाले लिक्विडेट होकर निकल गए हैं, लेकिन एज ट्रेडर्स हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी बनती है, ये तो हमको क्लियरली अभी यहाँ से नजर आ ही रहा है। तो इस वाली कैंडल पे अभी आपने ट्रेड ले लिया हो, देखो यहाँ पर ओके, बातों बातों में देखिए वो 3815 वाला पोजीशन तो वही हो गया। अभी इस जगह से हमारा एक्चुअल राइट पोजीशन बना था, जो कि मैं बातों बातों में मैं भूल ही गई। अगर आपने यहाँ से ट्रेड लगाया, क्योंकि आप देख सकते हो कि आरएसआई पे भी वो ऑलमोस्ट 28 पे रीच कर गई है। यहाँ पे उसने अभी फिलहाल बाइंग वीक बता रहा है, यहाँ पर सेलिंग स्टिल स्ट्रॉन्ग बता रही है। तो अभी नॉर्मल रिट्रेसमेंट होकर प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो ये वाली जो डिप हुई है, ये वाली डिप हमारे लिए ठीक एंट्री का पॉइंट बनती है। 3815 3815 जैसा मैं आपको बता रही थी, वो एक पोजीशन में अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी मैंने आपको बताई कि नेगेटिव होता है, अगर पॉजिटिव नहीं निकलेगा तो फिर ट्रैपिंग के सिचुएशन बहुत बन जाते हैं। एक मिनट में ना, मैं एक्चुअली इसको 4 आवर्स पे देखना चाहती थी और मैं कंप्लीटली मिस आउट कर दिया मैंने आपको। 4 आवर पे भी ये एग्जॉस्ट हो गई है गाइस। सेलिंग स्टिल स्ट्रॉन्ग बता रही है। एक मिनट, यहाँ पे भी सेलिंग स्ट्रॉन्ग है, सेलिंग स्ट्रॉन्ग है गाइस। स्टिल अगर आपने अपनी पोजीशन फिलहाल नहीं लेना हो तो ना ले, अभी ये स्टिल फर्दर नीचे होकर वो वापस से रिट्रेस होगी। तो अगर आपको अपनी पोजीशन अभी स्टिल स्टॉप करनी हो तो इस लेवल पे आप स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि मार्केट्स अभी स्टिल नेगेटिव चल रही है गाइस। तो थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करें, अपने पैसों को फंसाए नहीं या स्टॉप लॉसेस को हिट ना कराएं। तो देख समझ के अपने पैसे को अपनी ट्रेड लें। Guys, I can identify places where you can buy and where you can sell and all of that, but मेन इशू कहाँ पर आता है ना, कि आपने कितना लेवल अपने ट्रेड कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। तो वाइल आई मे टेल यू कि यहाँ बाई कर लो, यहाँ सेल कर लो, लेकिन अगर आपकी वॉल्यूम उतनी ज्यादा नहीं है उस टारगेट को रीच करने के लिए जो बेसिकली मैं यहाँ पर बता रही हूँ, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी आप ट्रेड लेना, वो सारे कैलकुलेशंस अपने दिमाग में रख के ले, क्योंकि कभी कभी मैं आपको छोटे छोटे मूव्स भी कैप्चर करके बताती हूँ कि इस जगह पर यहाँ पे एक स्कैल्पिंग के लिए एक आपको एक छोटा मूव मिल रहा है, जहाँ पे यहाँ पे आपको प्रॉफिट बनने के आपके यहाँ पर चांसेस बन जाते हैं। या फिर मैं स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या इवन फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डे ट्रेडिंग और एनीथिंग, मैं सारी चीजें ये शेयर करती रहती हूँ। लेकिन अल्टीमेटली जो आपने पोजीशन लगानी हो वो बेसिकली विल डिपेंड ऑन योर वॉल्यूम ऑफ वट एवर योर ट्रेडिंग वॉज। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो मैंने छोटे से मूवमेंट को
के लिए कैप्चर किया, तो उस मोमेंट में आपका ट्रेड फिट होगा या नहीं होगा, दैट इज टोटली समथिंग विच यू नीड टू डिसाइड ऑन योर ओन सेल्फ। क्योंकि हो सकता है आप $5 $10 वाला प्रॉफिट, मतलब $10 का पोजीशन ले रहे हो और $10 के पोजीशन में कितना ही आपको प्रॉफिट होगा। एक तो प्लेटफॉर्म की फीस होती है, फिर आई थिंक खैर छोटे से ट्रांजैक्शन पे टैक्स तो नहीं लगेगा आई गेस, बट जो फीस निकलने के बाद आपका जो भी आप पोजीशन लोगे, आप खुद सोच सकते हो कि उतने से छोटे से अमाउंट से आप क्या ही इतने छोटे से मोमेंट को कैप्चर कर पाओगे। तो इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज इट्स लाइक यू ऑलवेज हैव टू इधर, छोटे अमाउंट होते हैं तो या तो हॉडल करना ही पड़ता है, या फिर दूसरा यही है कि आप बड़े मोमेंट्स को लाइक ऑन बिगर टाइम फ्रेम्स कैप्चर करने की कोशिश करो, जहां पर थोड़ा सा मतलब आपको पक्का अगले 5, 10, 15, 20 मिनट में कोई ट्रेड नहीं होने वाला है, लाइक विद स्मॉलर अमाउंट फॉर श्योर आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल भी मार्केट चल रही है 0.45, 0.1% की भी मूवमेंट नहीं हो रही है, तो उसमें तो मतलब प्रॉफिट होने के चांसेस काफी कम बन जाते हैं। तो डोंट इवन थिंक अबाउट इट इन दैट सिनेरियो। तो this is something that you need to analyze it yourself, and positions जब भी लो, जब भी आप एंटर हो रहे हो, अपने कैलकुलेशन सही बिठा के अपने पोजीशंस लेते रहो। So I'm going to take some 5 to 10 minutes of break in coming few minutes. So let's continue to watch the markets. So this on the charts here would have been a good buy position if you have found it yourself. Like अगर आपने स्ट्रीमिंग को फॉलो की है और आपने मेरे साथ इस मोमेंट को कैप्चर किया है, तो यहाँ पर आपने लॉन्ग बाय पोजीशन आप लगा सकते थे, पर थोड़ा सा कॉशियस हो जाए। एंड एज वेल एज लाइक आई सेड कि आपका जो अमाउंट है वो रियली मैटर करता है। अगर आपने बड़ी अमाउंट की कोई ट्रेड नहीं ले रखी हो, तो इस जगह पे आपको प्रॉफिट नहीं बनेगा, एटलीस्ट विद इन शॉर्ट टर्म तो नहीं बनेगा। इसको लंबा होल्ड करते हो तो हो सकता है, लेकिन आप देख सकते हो कि इस समय पे सेलिंग स्टिल स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप मुझसे पर्सनली बोलेंगे तो मैं तो बोलूंगी कि यहाँ पे ट्रेड ले तो सकते हैं, लेकिन स्टिल क्योंकि सेलिंग फिर भी अभी भी यहाँ पर हावी हो रही है, यहाँ पर सेलिंग लाइक प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो कोशिश करें कि अभी ट्रेड ना ले, और ले भी तो कॉशियसली बाय ऑन डिफरेंट डिप्स, ताकि इस जगह पे मिस भी हो गया तो आपको नेक्स्ट वाले जगह पर अपने कोई पोजीशन आप कर फाइंड कर सकते हो। हाँ,
और एक चीज ये है कि like I was telling you on the positive and the negative side, शॉर्ट टर्म में तो आपने यहाँ पर कोई प्रॉफिट बनाने के कोई चांसेस मुझे नहीं लगते, एटलीस्ट स्कैल्पिंग में या फिर शॉर्ट मूव्स में, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट चल रही है, हाँ आप इसको थोड़ा सा लंबा समय होल्ड करेंगे जैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए नॉल दैट, तो पोजीशन मतलब लाइक यू नो प्रॉफिट होने के आगे चांसेस बन सकते हैं। जैसे इस डिप पे आपने खरीदा जो कि बेसिकली क्या था, ये 3789, अभी प्राइस फिलहाल थोड़ा सा ऊपर मूव होते होते 3814 पर मूव हो गया, पर 3814 पर मूव हो गया दैट डजंट मीन के यहाँ पर मतलब ना इसका एक ये कितना मूव होगा, ये बेसिकली 0.71 हो गया है। तो अगर एटलीस्ट ये लाइक एटलीस्ट 1% 2% के आसपास मूव हो जाता है, तभी भी डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ अमाउंट यू आर पुटिंग इनटू द ट्रेड पॉसिबिलिटी बन सकती है, बट अमाउंट बहुत छोटा होगा तो ये छोटे मूवमेंट को कैप्चर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। So see what will fit according to you and you can think about it. But on the negative side of it, I can still see के इस समय पे भी right now selling still भारी है, मतलब स्टिल सेलिंग प्रेशर बिल्ड है यहाँ पर, बाइंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर इस जोन को आप अभी स्टिल अवॉइड करना चाहते हो तो आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो अभी ये जो पिछला वाला जो स्विंग लो बना है उसको वापस से रिटेस्ट करके उससे नीचे से फिर से प्राइस वहां से रिट्रेस हो सकता है। तो ये एक और एक उसकी दूसरी सी पॉसिबिलिटी है। ओके, so I'll catch you guys with I'll catch up with you guys in next 5 to 10 minutes after a small little break, and then we'll talk about if or if not, was it a right kind of decision for all of us, whether we should have taken a trade or we shouldn't have, वो सारी चीजें हम आकर डिस्कस करेंगे डिपेंडिंग ऑन कि नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में बाइंग प्रेशर बिल्ड होता है या सेलिंग प्रेशर बिल्ड होता है, उसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे।
Yeah, I'm so sorry. I came live and then I was like watching something else. The comments and everything. I was trying to log into the platform. So people, whoever joins the stream, make sure you deposit the funds and start trading, because while we are actually analyzing it, I might hint for a short-term buy or sell position. So make sure you make the use of it. So while I was away for 10, 15, like 5, 10 minutes, I guess, the market slowly started reaching its high. Like here you can see it kind of went till 3841. I think this is what I gave you as your target ratio, right? For the long term long position. If I'm not wrong, I put my position here and what was my target here for a one is this was a this was almost like 1:4 ratio that we kind of achieved just about in couple of minutes. So like I said, during such kind of market movements, you can always pick up short-term positions. These positions can give you good trades only if the amount that you're investing is good enough after like your expense and everything. So you see, it was almost like close to 4.28, like 1:4 ratio that we were talking about. So I think this is what we were able to achieve here, this move. So if anybody who would have followed my signal, then you would have ended up making some good amount of profits, like 3789 to 3841. If I just talk in literal meaning, that was also around 3789, it was around $52 movement. So one Ethereum also somebody would have bought, would have given them around $52, but I know nobody will buy that kind of a thing. So even if, for example, say you have $10 and you have taken a 50x leverage, for example, let's hypothetically assume. So you took a $50 leverage. So you're almost taking a $500 position. So the price here was around 3789. Okay. So with your $500, you were able to buy 3789, means you were able to buy around 0.1319 Ethereum. Obviously on this there will be fees and I'm not putting the fees or anything, and then you sold it on 3841. Let's see how much will you be able to make. So in this move also, with a $10 move, at 50x leverage, you're able to make around $6 of profit. Imagine, even if you're basically I think both taker maker fees around, hypothetically imagine like your if it goes like I think minus 4, so you still left out with $2 as profit. So is it a good, is it a good idea? Is it a good trade? What do you think of it? Maybe you want to share it in the comments, do so. But I think it was a good move for sure, because market like from year to year till where it went kind of is in a good situation, definitely. So yes.
Guys, when you join the sessions and you have any questions, please feel free to ask anything. So I'm so sorry. Actually, while I went for a break, I totally forgot. Somebody who would have bought it at this level, I asked him to liquidate at this level. But yes, somebody who wanted to enter the market at the sell position could have done this on this particular move. So between the spot and the future market, also there is like too much of difference. So these prices are as per spot, and this is as per Coinbase. So can you see the differentiation? I'm going to close all of this for now because I don't want to confuse you guys right now. So you can see
So this is my Ethereum futures contract. This is my Bybit chart. I can see this, like the price which is trading on this is 3869 and it's 3810 here. And on Zbit platform, you can clearly see it's trading at 3803. So between the different exchanges itself, there is so much of differentiation. You can see between spot and futures also, there's at least approximately $50 difference. So somebody who wants to take advantage of these kind of situations also, they take advantage of such kind of things like buying here at a lower price and then selling, going and selling it on the other platform, which is possible, but then it all totally depends on how quickly you're able to transact. You don't know how to transact quickly, or system gives you technical problems, issues, things like that. The trade gets stuck, then again it might be a problem. So, but then yes, this is also another opportunity that we're talking about. So if I put some indicators on here like RSI, let me see. And then I have my DMI. Hi, my dear 441858. Welcome to the stream. Guys, welcome. Let's use the Gbit platform to see if we can use the charts and everything properly and do a bit of analysis here. So I'm going to change some settings here. I don't want MA5. I want 20. Sorry, I want 50. I'm going to close the last one and I want 200. And I'm going to put this on 1 minute chart. Let's also see 4 hours chart. So what is the color of the line that I choose for this 50 mm? 50 mm is orange color. So my short-term moving average is above my 200 moving average on a 4 hours chart. And price is basically below that.
Whereas on 1 minute, 1 minute chart also, I think the yellow line is for 50, the short-term moving average, and the green line is, the green one is for 200. So both are staying above the price. Price is below moving average, so it's in a downtrend right now. What do you think, guys? This is a good idea to trade? I mean, Webull platform. What do you think? Is this good? So you can see that on the platform that the current market price is showing here, market price, index price, the funding rate, predicted rate, 24-hour volume. So 2.63 million is what is getting traded, and 24-hour volume is 10.12 billion US dollars. And this is all like charts. Here you can see that RSI is on 45. So ideally here should have been a buying position for all of us, but unfortunately we missed out while speaking. So current situation, buying is trying to become strong, but selling is still strong here. Wait, DI plus is blue. Okay, it's the same thing.
A long buy position is available here. So there was a buy position, guys. So
Sorry guys, I think I missed it out. 87815. Hi, my dear. And 876 179. Hi. Guys, why do you just disappear? Like you say hi and then you disappear. If you want to trade and you want to use this platform for gaining some knowledge, please stay for some time and you say hi, you disappear as if like uh I don't know what to say. So there is no sell position as of now still. So you can wait for it to kind of go up. On the other side, it's still sitting at 48. So it's almost like near the neutral zones and the MI is sitting at 19. So the price has to become more stronger to be able to reach the overbought conditions on the charts. So what you see on the 1 minute chart is like both the moving averages are above the price. So that is indicating
clearly that the sellers are in control. The price, whether the short-term moving average or the long-term, both are actually below that. So in this case, it's basically very, very clear that price is in the downward trend. Sellers are in control in this current scenario. Here also you can see clearly that price is basically in downward trend. Sellers are in control in this scenario. The yellow line is for 50 moving average and the green line is for 200 MA. So
There is no buy or sell position because it's almost like near the near the neutral zones. So one more position which we had was here, but not buying here and exiting somewhere here could have been a good option. But currently the market has to further go down completely to be able to. Mm. Let the price move a little further down, then we can plan for a long buy entry from here.
No buy sell position at this level, guys. You can start liquidating from this position, guys, if in case anybody wants to take a short position.
positions can be liquidated from this end, guys. So this it does have capacity to go up. So both the moving averages have gone, like they are in between right now. You can see it's on 1 minute chart. So currently price is above that. Buying at the current levels is looking strong, but strong chances of price liquidating from this particular level is very much possible. So traders who want to take a short trade from here can take a short trade from here, because on RSI also it's reached exhaustion levels, and although base, like the buying pressure currently is strong still. The second indication is moving averages are also below the price level. So those two indicators are indicating that the current, trend that has like happened, like the temporary trend which is like gone up, the price going up, that is strong. But yes, so sellers now currently are trying to push the prices. So even if you guys, anybody wants to get into the rally to push the price down, you guys can take a short position from here. Price on RSI above 70 anytime. The liquidations, you guys can get into the rally and be part of either sellers or buyers, whatever you want to do. That's up to you. So the buying is coming down. So after price reaching like 70, 72, 75 above on the RSI is trying to come down. This is the futures trading platform that we are on, ZBet. So I have enabled 3 different indicators like moving averages, RSI, DMI, and each one of them has their own, use.
Moving averages, I'm using it because I want to see the overall short-term trend and long-term trend. And if there's any if there's any chance of price taking a reversal or something. So for that, I'm using moving average just to see if the price is above moving average or below moving average. And RSI, I'm using it because I want to know if it's reached the overbought or oversold condition. So that I know that I can take some trade from the overbought or oversold conditions. And DMI, I'm using it for understanding how my buying is, how my selling is, and my overall trend is. So currently my overall trend is at 31, which kind of indicates it's still strong. So the uptrend can still continue for some more time because currently the ADX is showing strong, the buying pressure is showing strong. So we are going to come again from this level, guys. You can start shorting now. So price has reached its overbought conditions already on the 1 minute time frames. It's already expensive. So the ADX, basically the trend is showing strong. One of the uh, confirmation is on the DMI chart, like DMI indicator. Other one is on on the moving averages front. So on shorter time frame, it's already reached its overbought condition. So liquidations can start happening from here, from this level. But if the buying pressure is continuing to build up, then the rally will continue. So let's see what will happen. You guys can start taking short positions from here.
because price is like very, very volatile, and you have to like be very quick in terms of making the decisions whenever you're taking trades, guys. I want it to be like real quick. So looks like the liquidations are happening, but again, at that level, buying is trying to become strong. So currently 38403839. Price is trying to. So somebody wanting to take a position, there is a short position here. Current levels you can liquidate. But if the price reaches somewhere near neutral zones, I would rather say you guys to hold on to your trades, because there might be small retracement that might be happening, and that can actually uh, you know not give you the right kind of results. Buying at this point is still very strong, guys, and even the trend seems to look strong. So before the price starts rallying uh, towards the downward direction, it still has some capacity to go a little further up, and then from there the liquidations might start happening. So currently it's in an indecisive zone where it's, you can see these the indecisive candles that are getting created on the chart. Those indicate that at that point in time, price is like not able to decide whether it should go up or it should go down, because both buyers and sellers, especially at this level, when it's either in overbought or in its oversold condition, both are playing this tug of war. So when it reaches the topmost level, now the people who have already bought it at this lowest level, now they are trying to liquidate their position. They're trying to sell and then try to bring the price down. But what the other side of the story is, understand that though they are trying to sell it, there should be enough buyers also at this end, right, to accommodate this. So if the sellers were selling it and the buyers are able to meet that demand, then it's good enough. Where if the demand is increasing, then in that scenario, the price will continue to rally up only. Even though the sellers try to liquidate it, they won't be successful in their
trade here. So this is the zone currently where we are talking about. Hi, my dear, 638398. Okay, my dear, I understand. You're new here, and I'm ready to let you know everything from the starting. It's just that you need to first tell me more about yourself in terms of how much experience you have, what you're doing, uh, have you traded before, which crypto are you trading. If you tell me a little more, then maybe I can help you out with it. So I'm in the futures trading platform right now, the Zbet. So I was giving buy and sell signals from that time. Now, what are your like maybe your personal requirements? If you want to share that, you're welcome to do so. Because what exactly you're looking for, if you tell me, probably I can guide you from there, and that is how we can move ahead with it. Because it's a vast subject, honestly speaking. 638398, I'm talking to you only because it's a very vast subject and it has a lot of things to know. But what exactly are you trying to understand? If you want to tell me, you can tell me that. So currently, the chart you see, I am, on Ethereum chart, and I am trying to tell you guys buy and sell positions here, and at what levels should you buy, at what level should you sell. So all these are the things that we're discussing here, and currently, as you can see on the chart, like small green candles are getting formed, which is clearly showing that price is trying its level best to trying to break through the previous high that it has created. So but there is like a big tug of war that's going on between buyers and sellers, and selling is slightly selling is at 10, whereas buying is at 38 level. Okay, so with the current scenario, I can still say um, buying is stronger than selling, and because even the moving averages are below the price, the trend seems to be going strong. The one indication is on DMI, the other indication is with moving averages. The third thing that we can see is RSI at overbought conditions. So the trend is likely to continue. It's kind of getting into the consolidation phase where it's trying to decide. One, two, three.
So there's only half an hour left out for the session to end. The moves are small, but then moves are like not so great, but they are the overall trend looks strong and the buying is also looking strong. So what I can currently see is like market is trying to consolidate. So it's like very, very minimalistic, small, little moves it's trying to make. So after reaching this high, now it's trying to consolidate in this area. Now from here, we will see some kind of move, either price completely coming down or the price completely moving up. So both the scenarios. Okay. Buying is still strong. Selling is becoming strong. Overall trend is strong. Yeah, if this liquidation happens, like major one, a big rectangle forms or something maybe, then selling can get yeah, selling is becoming strong, guys. I anyways told you like here was the place you should have actually liquidated, but now price is slightly coming near the neutral zones. It's almost reached the neutral zone. You can see on the RSI it's reached the neutral zone 50. So in this scenario, we don't take any buy or sell positions. We rather keep quiet here in this zone. Looking at the current scenario, if price can retrace back from this region and move up, possibility is like yes, like because from here for it to further go up, the probability or the chance of it going up is more than the probability of it going down. So from here, it can still bounce back, but there's not much of difference between the two. It's almost trying to reach the equilibrium like this. So then, but still, buying is strong still. But because this move can be a very very minimalistic move because it's already near 50, and for it to reach till 70 and then bounce back completely to change the trend has very less capacity. So I want to tell to you guys that in this kind of scenarios you should rather not trade only, because whether the price will go from 50 level to 70 and above or it will go directly to 30,
There is no proper certainty. So always wait till it reaches below. When you want to buy, yes, sure. When you want to sell, you can always wait that it goes up and then you sell from there, like from the top. But when it is down, it has to be completely down. It has to be like exhausted. Even on the short, try selling it when it is in exhausted positions. Not from somewhere in between. I know sometimes price takes a reversal all of a sudden, even when it has not reached the exhausted level sometimes. I think that's primarily because of some people trying to exit the markets even before they actually reach the exhausted levels. The safer way is to let the price reach the exhausted levels. I can understand, like, some of you, when you take trade, you put a risk to reward as one is to one, one is to two, one is to three. So sometimes your target gets finished, like targets get achieved here itself. So you don't really want to wait until it reaches exhausted level. So you just close your trade here. So it is very much okay. I'm not saying there is anything right or wrong, but just in case you don't know where to put the target, where to take a trade, where to exit, where to enter, and you're not too sure, it's better to always take the trade in the exhausted levels only. And the exhausted levels are like on our RSI, it is above 70, and on RSI below 30. When it is below 30, you take a buy position. When it is above 70, if you take a sell position. That is the only logic. Otherwise, you become a professional trader, and you've been trading, the price movements, where to put your risk to reward, where to exit, where to enter, all that you're aware of. Then your entry can be here, your exit can be here, or your entry can be here, your exit can be here. That's totally up to you. All I try to do is I try to show you guys, a safer entry, where, like, you can use that for swing trading. Like, even in short term, if you're not able to capture some movements of the price, then at least in swing trading or intraday trading, you will be able to capture some movement. So that is why I'm always, putting emphasis on the extreme levels more than anything else. Okay, so now, price being near, like on RSI also, it's reached below neutral zones, it's reached the bearish territory right now. So ADX is becoming weak, which is basically the trend is becoming weak. We can see that selling is also becoming weak, and currently selling and buying, both are actually going hand in hand. In fact, selling has taken over buying right now. So in this scenario, basically, if the price has to bounce back from this region, it will basically, if buying at this level becomes strong, then it can bounce in the upward direction. And if in case it's going to come down, then it will be buy position. If it comes down below 30 or something, it's near 40. So user 128052, welcome to the stream. I hope you guys are following what we're discussing here, and you guys are making some successful trades. If you have any questions, doubts, you can always ask in these sessions. I'm always ready to answer to your questions. So make sure that
whatever questions related to technical analysis or fundamental analysis or spot or futures trading you have, you can always ask me. So currently we were discussing about whether we have a buy or sell position. मेरे विड्रॉल क्यों नहीं हो रहा है? प्लीज अपने विड्रॉल में बैलेंस 0 दिख रहा है. ओके, आपने कोई ट्रेड प्लेस किया था क्या? 128052 आपने कोई ट्रेड प्लेस किया था एंड एक बार अपनी ऑर्डर हिस्ट्री में जाकर देखें कि आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया था या नहीं. ऑर्डर प्लेस हुआ है तो आपने प्रॉफिट में निकाला या उसको लॉस में निकाला, क्या किया, एक बार चेक करें. कभी कभी होता है कि लाइक हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग या कोई भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो कभी ऑर्डर एग्जीक्यूट होके लिक्विडेट हो जाता है तो फिर बैलेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा, मतलब यानी नलीफाई हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा. तो हो सकता है कि आपने बैलेंस वो वहां पे खो दिया हो, आई डोंट नो. अगर आपके पास वो सारे डिटेल्स हैं तो एक बार चेक करें. अदरवाइज आपको विड्रॉ करने पर क्या एरर आ रहा है मुझे एक बार बताइए, या तो यहाँ बताइए या तो फिर मुझे स्क्रीनशॉट भेज के बताइए कम्युनिटी में, तो मैं आपको देखकर बता सकती हूँ कि शायद क्यों प्रॉब्लम आ रही होगी. विड्रॉवल में नॉर्मली प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए. यूजुअली थोड़े रेस्ट्रिक्शंस हैं प्लेटफॉर्म पे कि आप अगर सिर्फ डिपॉजिट करके विड्रॉ कर लेते हो विदाउट ट्रेडिंग और एनीथिंग, तो ऐसे में सिस्टम आपको यू नो बेसिकली होल्ड करता है फॉर वेरियस रीजंस. क्योंकि डिपॉजिट करके विड्रॉ करना लाइक इमीडिएटली शायद इट्स नॉट अलाउड एज फार एज आई नो. लेकिन अगर आप जैसे ट्रेडिंग आपने की हो, एक या दो ट्रेड भी लिए होंगे तो विड्रॉल की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. आई डोंट नो आपको ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है. एक मिनट, 5,000 डिपॉजिट किया था, कंपनी से कॉल आया था. ट्रेड के बिना विड्रॉल नहीं होगा. तो कितने का ट्रेड करना पड़ेगा? 54 USDT डिपॉजिट किया था, अभी 91 USDT है. 54 USDT डिपॉजिट किया था, अभी 91 USDT की विड्रॉल बैलेंस 0 दिखा रहा है. ऐसे तो नहीं होता है कि आपने ट्रेड में लूज किया है, आपने प्रॉफिट बनाया कि नहीं, क्योंकि शायद आपने पहली बार आपने लाइक आप उसमें एंटर हुए हो ट्रेड में और फिर आपको वो बोनस जो मिला है फ्री ट्रेड के तौर पर, क्या आपने वो फ्री बोनस यूज करके ट्रेड लिया था माय डियर? आपने फ्री ट्रेड मतलब आपने फ्री जो बोनस आता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, आपको एक फ्री ट्रेड का एक ऑप्शन मिलता है, तो आपने क्या वो बैलेंस यूज करके ट्रेड लिया था अपना? क्योंकि अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो उसमें भी कंडीशंस हैं. ओके, प्रॉफिट किया, पर ओके प्रॉफिट किया तो फिर प्रॉफिट पे बेसिकली आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए. अगर लॉस होता है तो वो जो बोनस है वो बोनस क्लेम हो जाता है. ओके, तो एक काम करें, अगर आपको कुछ दिक्कत आती है ना तो मैं एक चीज आपको बताती हूँ. आप यहाँ पर जाकर कस्टमर केयर से डायरेक्टली बात करें. होल्ड ऑन. तो आप देख सकते हो, ये मैं जीबिट के होम पेज पे हूँ और यहाँ पर आपको इधर कॉर्नर पर आपको कस्टमर केयर का आइकॉन दिख रहा है. आप यहाँ पर जाकर क्लिक करें
ओके, इसको क्लिक करके कस्टमर केयर से डायरेक्टली बात करें। ओके, यहाँ पे कस्टमर केयर से डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं, क्योंकि माई वर्क इज टू हेल्प यू गाइस। नहीं मैम, 54 यूएसडीटी थे, उससे किया 91 यूएसडीटी। हाँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? देखो, आप अगर प्रॉफिट करते हो तो कोई इशू नहीं है। यू नो, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई डोंट नो, अगर सिस्टम वो आपका बोनस क्लेम कर रहा है, प्रॉफिट में तो मोस्टली क्लेम नहीं करना चाहिए। प्रॉफिट में आई थिंक प्रॉफिट के साथ आप वो बोनस को क्लेम, मतलब बोनस को आप विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि दैट बिकम्स योर एसेट। बट अगर इन केस आपने उसको लॉस कर लिया, यानी आपने जो फ्री ट्रेड आपको जो एक मिल रहा है उसमें आपने ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं किया, लॉस किया, तो फिर शायद आपको वो क्लेम करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो वो पैसा डूब जाएगा, वो पैसा नहीं रहेगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जाकर कस्टमर कर सर्विस से एक बार अपनी ये प्रॉब्लम अपने स्क्रीनशॉट शेयर करके बताना उनको, then they will be able to tell you what exactly is going wrong, और फिर उसके हिसाब से आप अपना उनसे डिस्कस करना, क्योंकि आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू ऑल दैट। कस्टमर केयर इज द राइट टीम। यहाँ पर लाइव सेशंस में बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस आप मतलब कर सकते हैं। अगर कस्टमर सर्विस से रिलेटेड होगा तो मैंने आपको एप्लीकेशन पे बताया है किधर जाकर आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है। तो कस्टमर सर्विस के पास जाएं, उन लोग को अपना यूआईडी दें, अपना स्क्रीनशॉट भेजें और आपका जो भी इशू है उनको भेजकर अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व करें। आई होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन गाइस। आप लोग में से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, और शायद मेरे ख्याल से कोई कोई लोगों को मतलब ये सारी बेसिक चीजें भी पता नहीं है। अगर आप लोग को बेसिक चीजें नहीं पता है तो बेटर है कि थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ ये सेशंस को ज्वाइन करें, और सेशंस में इन सारी चीजों के क्वेश्चन आंसर सब कुछ आप कर सकते हैं। मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि इसको लाइक इन द इजीएस्ट लैंग्वेज आप लोग को एक्सप्लेन करूँ, तो लाइक मेक टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड लर्न इट। यू डोंट नीड एज अ बिगनर ट्रेडर कि आपको सारी की सारी एडवांस लेवल की ट्रेडिंग आनी चाहिए। बेसिक से भी आप ठीक ठाक ट्रेडिंग करके ठीक ठाक प्रॉफिट बना सकते हो। तो So take advantage of these sessions and please learn everything. Not necessary के सारे एडवांस लेवल के आपको चीजें आनी चाहिए। इट्स अ नॉर्मल स्मॉल, मतलब एक इजी सा ही चीज है जो कि है बाई लो सेल हाई। सिर्फ कौन से लो पर खरीदना है, अगर वो आपको आ जाता है तो आपको इतना सब कुछ लाइक कैंडल स्टिक्स हो गए या चार्ट पैटर्न्स हो गए, या हम जो इतनी बड़ी बड़ी वर्ड्स बोलते रहते हैं, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, दिस दैट, ये सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ इवन आई नो के कुछ चीजें होती है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप खुद प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा, बट इनिशियली सिर्फ अगर आप बाई लो सेल हाई का भी कॉन्सेप्ट लेकर अगर एक दो तीन मेन इंपॉर्टेंट चीजों को जानकर अपनी ट्रेड्स लेंगे, तभी भी सिंप्लीफाइड वे में भी आप सक्सेसफुल ट्रेड्स ले सकते हैं। मैंने खुद अपनी लाइफ में मतलब अपने खुद के ट्रेड्स में मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीकों से ट्रेड लेती हूँ। कभी कभी
मैं शॉर्ट मूवमेंट्स का कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ, जहाँ पर अगर मेरा वॉल्यूम ज्यादा हो तो मैं बड़े छोटे मूवमेंट से मैं लाइक विद इन लाइक लेस पीरियड ऑफ टाइम मैं ट्रेड प्रॉफिट निकाल लेने की कोशिश करती हूँ। या कभी कभी ऐसे होता है कि लाइक पोजीशन लेने पर हो सकता है कि मार्केट ठीक नहीं हो या मार्केट के कंडीशंस, तो स्विंग ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट बन जाता है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं, और आपको जब भी मैं बाई सेल पोजीशन बता रही हूँ तो मैं आप लोग को क्लियरली बता रही हूँ कि अगर आप शॉर्ट टर्म में जा रहे हो, अगर आप स्कैल्प करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका अमाउंट अगर बड़ा नहीं होगा, पोजीशन की वैल्यू बड़ी नहीं होगी, तो आपकी बड़ी पोजीशन नहीं होगी, तो फिर कम मूवमेंट में प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म की फीस होती है जो निकलना होता है, और वो उतना मूवमेंट अगर वो कैप्चर नहीं होगा तो फिर आपको बेसिकली प्रॉफिट कम समय में होने के चांसेस कम होते हैं। तो रिस्क बहुत है, अगर कैपिटल आप बढ़ाते हो तो रिस्क तो डेफिनेटली बहुत होता है, लेकिन एट द सेम टाइम रिस्क होने का भी होता है, लेकिन आप प्रॉफिट बनाने के लिए आपको कम टाइम लगता है। तो दिस इज व्हाट इज एसोसिएटेड। तो आप जो भी मैं लॉन्ग या बाई पोजीशंस जो भी बताती हूँ ना, एक चीज ध्यान में रख के आप एक काम करें हमेशा, कि अगर आपकी अमाउंट आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो जिस भी अमाउंट में, तो आई नो कि मोस्ट ऑफ यू बेसिकली टेक लेवरेज, ऑल्सो लेवरेज करके आप अपना पोजीशन को बढ़ा लेते हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि इट इज ऑलवेज, एक सेकेंड, या इट इज ऑलवेज लाइक आपको अपना जो आप अपना टारगेट रखोगे या आप जो पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हो, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी उसको चेक कर लेना और लॉन्ग टाइम फ्रेम पे भी चेक कर लेना कि आर यू एक्चुअली एंटरिंग एट अ डिप। क्योंकि क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में आप एंटर तो हो जाते हो, लेकिन क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म फ्रेम पे आपने देखा नहीं कि एक डाउन ट्रेंड आने वाला है या रिवर्सल आने वाला है या ट्रेंड बदलने वाला है, तो ऐसे समय पे आप गलती ये करोगे कि आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आपने खरीद तो लिया होगा सोच कर के ओके ये सबसे चीपेस्ट या मैंने डिप पे खरीद लिया, पर लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे आपने नहीं देखा, तो वहां पे आपके मनी के स्टक होने, ट्रैप होने के बहुत चांसेस बन जाते हैं। या फिर अगर आपने स्टॉप लॉस लगा के अपना ऑर्डर लगाया हो, तो वहां पर फिर स्टॉप लॉस भी हिट होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, या फिर पोजीशन लिक्विडेट हो जाती है अगर खुद से अगर आपने जो भी स्पेक्यूलेट किया है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए अपना पोजीशन ले कि लंबे समय में प्राइस किस तरफ दिख रहा है, कि डाउन ट्रेंड में दिख रहा है कि अप ट्रेंड में दिख रहा है। हमको यूजुअली बाई पोजीशंस कोशिश करना है कि अप ट्रेंड में ले, ताकि आप वो ट्रेंड के साथ अपनी क्या कहते हैं कि अपनी ट्रेंड के साथ आप मूव हो सके करके। डाउन ट्रेंड में लेंगे तो आपको हो सकता है कि किस डिप पे खरीदना हो अगर उसकी नॉलेज ना हो, या किस लेवल पे आपको एग्जिट मारना हो, लाइक क्योंकि डाउन ट्रेंड में भी एक्चुअली आप बाई एंड सेल कर सकते हो, बाई भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको उस यू डोंट हैव द एक्सपर्टीज ऑफ scalping or taking advantage of the small moves, या फिर 1:1 रेशियो या 1:2 के रेशियो में आपको अपनी पोजीशन एग्जिट करने की स्किल नहीं है, स्टिल अभी वो स्किल डेवलप नहीं हुई है, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे में बेटर है कि आप या तो अपने वॉल्यूम को बढ़ा लो, ताकि कम पोजीशन में कम मूवमेंट में आपको अच्छा सारा प्रॉफिट देखने को मिले, या फिर दूसरा यही कर सकते हो कि अगर प्रॉफिट को नहीं बढ़ाना हो तो फिर ऐसी स्ट्रैटेजीज पिक करें जिसमें आपको थोड़ा इंस्टेड ऑफ स्कैल्पिंग आप उसको स्विंग ट्रेडिंग में, या आप अपना थोड़ा सा लंबा समय में वो पोजीशन को होल्ड करके आप अपना ट्रेड ले सको। बट क्योंकि अभी मैं फिलहाल फ्यूचर्स ट्रेडिंग में हूँ, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में तो कभी कभी विद इन मिनट्स टू सेकेंड्स आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है,
तो ये भी आपको एक चीज देखनी पड़ेगी। लिमिट ऑर्डर्स लगाते हो आप तो शायद मतलब मार्केट पे आप अगर नहीं बिहेव कर रहे हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर लिमिट पे कर रहे हो तो आपका पोजीशन मतलब हो सकता है कि अभी एग्जीक्यूट हो या बाद में एग्जीक्यूट हो या जो भी हो, यू नो इट स्टिल विल हैव सम टाइम, जो भी आपने प्रेडिक्शन ली होगी कम की ज्यादा की। लेकिन मार्केट में मोस्टली जो है ना, आप जब ऑर्डर फिक्स करोगे इमीडिएटली हो सकता है कि क्योंकि प्राइस मूवमेंट्स इतने फास्ट 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 चलते रहते हैं तो लिक्विडेशन बहुत जल्दी हो सकता है। तो करेंटली एज आई वाज टॉकिंग, अभी आप होपफुली माय डियर 128052 आपने कस्टमर सर्विस से बात करके अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर ली होगी। Meanwhile, I was actually talking about the buy sell position here. यहाँ पे मुझे चार्ट पे स्लाइटली एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, एंड देन माय यू नो लुकिंग एट प्राइस, मतलब डीएमआई पे मैं जो बाइंग और सेलिंग प्रेशर देख रही हूँ, 21 इज व्हाट इज बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर इज एट 24। ओवरऑल ट्रेंड बेसिकली वीक होता हुआ नजर आ रहा है, तो सेलिंग प्रेशर स्टिल थोड़ा सा एज कंपेयर टू बाइंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से प्राइस या तो अगर बाइंग प्रेशर कंटिन्यू सॉरी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा तो यहाँ से प्राइस पूरा थोड़ा सा और रिट्रेस करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, जाकर पूरा एग्जॉस्ट होकर या तो ऊपर की तरफ उठेगा या फिर स्लो लिटिल रिट्रेस करके फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूव होगा। तो फिलहाल थोड़ा सा अगेन प्राइस स्टक हो गया है, पर क्योंकि मुझे चार्ट पर एक डब्ल्यू का पैटर्न दिख रहा है जो कि डबल बॉटम का एक पैटर्न दिख रहा है, तो डबल बॉटम जब भी क्रिएट होता है तो नॉर्मली प्राइस उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो लेट्स सी कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे। छोटे मूवमेंट में अगर देखो तो वहां पर एक एम भी बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि डबल टॉप हो गया, पर ओके डबल बॉटम नहीं बन रहा है, डबल टॉप बन रहा है आई थिंक। एक बार मैं अपना ब्रश ओपन करके आप लोग को बताऊंगी। वेयर इज इट माय ब्रश? इस पर नहीं दिखेगा शायद, मैं इस पर बताती हूँ आप लोग को कि जब भी प्राइस, अगर एक सेकेंड, वेयर इज माय ब्रश, अगर जब भी प्राइस चार्ट पर आपको ऐसे डबल बॉटम बनाते दिखे तो यहाँ से समझ लो कि प्राइस मोस्टली नीचे की तरफ बढ़ेगा। अगर प्राइस आपको चार्ट पर डब्ल्यू बनाते हुए दिखेगा तो मोस्टली रिमेम्बर के प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर एक एम बनते दिख रहा है, तो यहाँ से प्राइस फर्दर नीचे की तरफ जाएगा, प्रोवाइडेड दैट यहाँ पे सेलिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो ये फर्दर नीचे की तरफ जाएगा।
All right, guys. So with that, we're almost ending the session, and I hope today was good. I think though like market is down, but I think it seems like there was good amount of buy and sell positions that we were able to get. I don't know whoever was able to join these sessions and was able to capture these moments that we've discussed. Were you guys able to make any profits? Were you able to take any trade or not? Do let me know. Even if you are not taking the trades, remember this is all for guidance and this is all for education purpose. So in case you don't take any trades also, that's very much okay. You can always use this guidance to go and put the information on your own charts, like whichever crypto you're trading in, and then take trades in your particular crypto that you want to take trade in, because it's up to you guys. And I'm not saying that because I am analyzing Ethereum here, you also have to take position in Ethereum, you also have to trade in Ethereum. I'm not saying that. You can always collect the information from here, like take the guidance, educate yourself what we are talking about, what we are looking at, like what are the different things on the chart that we are looking at, what is important for us in different things, like aspects that we need to consider. Where is your buy position, where is your sell position, where you shouldn't liquidate, what how does moving average help, all these things. You take the guidance and then go back, put your charts on and analyze it for yourself, and then you can take your trade, guys. So that's simple it is. And the best part of Zbit is on the Zbit app, like we app, I can understand can be like difficult. I think we do have the option of also looking at charts while trading, but that can become a little maybe difficult. So what I can say is, you can in that scenario uh, like put this desktop version of it, which is such a beautiful thing. Like you have the charts on the left, you have the order book, and you can always basically like open your Zbit app, and then you can continue to trade, because we are there like 8 hours a day on Friday, Saturday, and Sunday. So you can use this to basically get your guidance every now and then continue trading. So I hope this is all useful for all you guys, and I will see you tomorrow again at the same time between 4 to 8 p.m. Dubai time. So this is as per Gulf Standard Time. So make a note of the timing. I will see you guys tomorrow again with some new buy sell position. So if anybody would have taken my guidance seriously, I'm sure you would have made some profits. And I wish you guys all the very best in your crypto journey, and be careful. Yesterday was a day which was like I can definitely say that yesterday was a day which you can remember in the history, where you saw such a drastic crash, which actually tells that crypto markets, how volatile they are. Like in a day, Bitcoin fell like around 12-13%, Ethereum fell around like 28%, Doge fell like 65%, Sui fell like 85%. So imagine, that is the kind of crazy volatility that we're talking about. So be careful when you trade, take safe trades, only invest that much which you think you can afford to lose. And please, for God's sake, like do your own research too, not just blindly follow anyone and everyone. Even if I'm saying something, I want you guys to be sure on your own side also, that what you are doing, you're absolutely confident and you are doing in the right direction, and then only pick up a trade. Okay, because you are entering into trades without keeping complete knowledge, or without understanding what you're getting into, that can cost you a lot. So be careful on that front and trade safely. I will see you guys tomorrow at the same time between 4 to 8 p.m. Dubai time. So take care and have a great evening ahead. All right, so people joining from internal app, you guys know
you guys know what to do, and reach out to me in the community, in my Telegram community also, if you want to talk to me offline. And just in case you still have any doubts, anything that you want to clarify, online, offline, you know where to reach me. All right, take care of yourself. Have a great evening. This is Nida Afreen signing off from Zbit. I'll see you guys tomorrow between 4 to 8 p.m. Dubai time.